डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के टॉपिक में हमने फैक्टराइज करना है। वी हैव टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। वी लर्न, हम सीखेंगे कि हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करें। इससे पहले कि हमने सीखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, वो बाय स्प्लिटिंग कंपैरेटर हमने किया था। अब यहाँ पे जो मसला है क्यूबिक पोलिनोमियल का, इसको हम फैक्टराइज कैसे करें, या अभी किताब का क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इसका सेकंड पार्ट आपके लिए चुन लिया है। तो सेकंड पार्ट हम देखें, इसमें देखें हम हमारा जो पार्ट है वो है एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x-5। लेट मी कॉल इट एज px. So we are given with a polynomial in variable x, that is x cube minus 3 times x square minus 9x minus 5. First of all, we had to look into the constant term. जो constant term हमारी है that is -5. -5 जो है इसके जो फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं -5 के फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं that is +-1 and +-5. सो जो फैक्टर्स हैं इसके, इनको हमने अब करना है यहाँ पे। लेट मी, पहले हम -1 के लिए सब यहाँ पर तो हम करेंगे। अगर देखें हम -1 इसका 0 है कि नहीं है, वी विल कैलकुलेट इट्स वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट -1. लेट मी कैलकुलेट नाउ p ऑफ -1 मीन्स -1 क्यूब, रिप्लेस करना है x को -1 से, -3 टाइम्स -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 -5. So we will get -1 cube means -1 as it has an odd power. -3 into -1 means +1, -1 square means +1, +9 -5. We will get -1 -3, and this -5 +9. So we will get -1 -3 -5 means -9 and +9, that will be equal to 0. So what we got is that p of -1 is equal to 0. So when p of -1 is equal to 0, therefore by factor theorem, we get, this will imply that x minus a, that is over here, -1, that is equal to x plus 1, is a factor of p of x. So we got that. Now when x plus 1 is a factor, we have to divide. X plus 1 is a factor of p of x, so we will divide the p of x by x plus 1 and get a quotient of degree 2, that is a quadratic polynomial. Then we have to factorize that quadratic polynomial into real and factor. That is very simple by splitting middle term. Now we will divide the px, dividing p of x by x plus 1. We will do the division by synthetic division method. तो synthetic division सिंपल है, ऐसे करें हम। यहाँ पर कोफिशिएंट देखें x के, px के, वो हैं 1 -3 -9 -5, and the 0 of this is -1. x -1 का जो 0 है इसका, वह है -1. we got over here this. तो हमने इसमें डिवाइड करना है, बाय साइंटिफिक डिवीजन करेंगे हम. ऑल दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ, व्हाट आर दीज कोएफिशिएंट्स ऑफ p of x. now we will do as we have learned the method of scientific division. ये यहाँ आएगा सिंपली, तो v1 1, तो यहाँ लिखेंगे -1. अब इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, 3 और -4 आएगा. -4 1 -4 1 +4 आएगा, यहाँ पर +4 लिखें हम.
एंड 9 एंड यहाँ रहेगा -5, +5 रहेगा तो यहाँ +5 रहेगा। इनको ऐड करने पर हमें 0 मिलेगा, 0 मिलना ही था क्योंकि ये इसका फैक्टर था। देयरफॉर हमारा देयरफॉर क्वोशंट जो हमें यहाँ बचा जो फैक्स क्या है वो है जिसका जो है रिड्यूसर, हम लिखेंगे रिड्यूसर डिग्री, px डिग्री 3 थी तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री आएगी वो आएगी स्क्वायर, हम लिखेंगे 1x² -4x -5, so we got this as a quotient. Now we'll factorize it further and get. Now we will call it as qx. Q of x is that we got, what we got is x² -4x -5, x² -4x -5. Now we will factorize it by into real linear factors, as we have learned how to factorize a quadratic polynomial by splitting off middle term. Here the leading coefficient is 1. We'll multiply 1 with the constant term, that is 5. We'll get 1 5 are 5. 5 के फैक्टर 2 निकालने हैं तो 5 के फैक्टर 2 हैं 5 1 are 5, so that 5 minus 1 is equal to 4. इस 4 को हम लिखें यहाँ पर तो हम लिखेंगे x² minus, instead of 4 we will write 5 minus 1 and there x minus 5 x² minus 5x plus x minus 5. So we have separated the middle term in two terms, that is minus 5x and x. Now here the common we will carry out is x minus 5 plus 1 into x minus 5. और पास अब दो यहाँ पर हैं टर्म्स हैं, एक ये कॉमन टर्म है दोनों में तो हम इसको बाहर रखें। x minus 5 we will put it as common term, then we will left with x over here and 1 over here, that is now we have resolved it into real linear factors, that is q of x. Now by so division algorithm we know what we know is p of x is equal to g of x, that is x plus 1 was its factor and the other was q of x. Q of x is now this q of x, so it is equal to x plus 1 into x minus 5 into x plus 1, or this can be further put in the form as it is p of x, it is p of x entirely. X plus 1 is twice, so we can write x plus 1 whole square into x minus 5. So we have resolved it into factors, 3 factors, x plus 1 and x minus 5. So this is the factorization of a cubic polynomial we got over here.